So the formulas which I had told you students initially, it was your theta is equal to length of arc upon. So we have got the formula as S bar is equal to theta bar across R bar, students. Agreed. And that was the first formula that we learned it. Students, agar S bar ko main leta hu is equal to theta bar, students, cross R bar. Can I differentiate on both the sides with respect to time? Differentiating both the sides with respect to time. So ds by dt, students. Is equal to d theta by dt cross R. Students, ds by dt we consider will be velocity. Can you tell me what is d theta by dt, students? Anyone? Students, can you tell me what is d theta by dt, students? Come on, anybody of y'all? Shubham, can you tell me, Shubham? Ria? Labdi, come on, Labdi, you tell me. Even she's also. Students, y'all are there or not there in the lectures? Kashish, tell me. Omega. Very good. Because students, this class में book भी नहीं है, फिर भी she's answering it. It's omega bar, cross R bar. Absolutely correct. ये सही जा रहे हो. यानी students, तुम्हारा next relation अगर मैं बोलूँ तो V bar is equal to omega bar cross R bar. This is the correct relation in vector form, students. ये क्या है मालूम है? Relation between linear velocity and angular velocity for a body performing circular motion in anti-clockwise direction. Students, यहाँ पे जो कुछ भी हम बता रहे हैं, motion is in anti-clockwise direction. This is I. Let us say this is J and this is K. ये ध्यान में रखना students, and I made it very clear. अभी ध्यान से सुनना. Now suppose if I say a body which is performing circular motion. Suppose if I say that the body is performing circular motion, और ये सोचो कि ये तुम्हारा horizontal plane है students. Please everybody listen carefully. ये horizontal plane है. ये तुम्हारा horizontal x-axis. This is your y-axis. And students, the plane of revolution is z-axis. Okay, students. Now, if I say the particle is performing circular motion, if I say it's performing circular motion, what about direction of velocity? The direction of velocity goes on changing. At each instant, students, how exactly velocity and position vector? Students, at each instant, how exactly your velocity and position vector? And what is the answer? Your velocity and position vector are always mutually perpendicular to each other. Students, ये बता थे कि नहीं बताया था? Students. Yes, sir. यानी यहाँ पे V और R के बीच में angle is 90 degrees. Students, we consider dot product will be equal to 0. That's made it very clear in this case. लेकिन जब भी body is performing circular motion, students, वहाँ पे मैंने बताया था कि since there is velocity, so there has to be an acceleration also, students, जिसको हम बोलते हैं tangential acceleration. And if for a body performing circular motion, students, there is a tangential acceleration. At the same time, there is one more acceleration which is directed from the particle towards the center, जिसको हम बोलते हैं radial acceleration or acceleration centripetal. Students, क्या ये clear हुआ? हाँ students, कोई भी body अगर circular motion perform कर रहा है, तो circular motion, तो उस time पे उसके दो acceleration है, tangential और radial. अगर बाई चांस, स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस मैंने सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये स्टोन लिया है स्टूडेंट्स, जो सर्कुलर मोशन करवा रहा हूँ, आई गेटिंग इट विद अ थ्रेड. ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बाई चांस अगर मैंने यहाँ से थ्रेड को काट दिया, तो डोंट यू थिंक सो दैट द स्टोन इज गोइंग टू गो टेंजेंशियली? हाँ स्टूडेंट्स. Students, if I take a stone and if I'm revolving the stone in a horizontal plane, at a particular instant, the stone is at point P. If I take my scissor and if I cut this यहाँ पे, तो क्या होगा? Will that stone will go tangential? Yes, in the direction of tangential velocity. So जिस direction में displacement होगा, उसी direction में velocity होगा. जिस direction में velocity होगा, उसी direction में acceleration होगा. वो कौन सा acceleration होगा? Tangential acceleration है. At the same time, does the body has radial acceleration also? Yes. How do I come to conclusion there are two accelerations? कैसे पता चलेगा कि दो accelerations है? तुरंत
तुरंत यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट स्मार्ट होगा ना, वो बोलेगा सर क्यों ना हम इसको डिफरेंशिएट करें, 20 किलो ओमेगा बार क्रॉस आर बार, कैन आई डिफरेंशिएट दिस इनटू with respect to time and I'll use product rule and derivative students. हाँ स्टूडेंट्स कुछ याद आ रहा है? प्रोडक्ट रूल इन डेरिवेटिव स्टूडेंट्स, y is equal to u into v, so what is the formula? Anybody knows it? डिफरेंशिएशन है ना, एग्जाम्स आ रही है ना, कैलकुलस हो रहा है ना, पीडीएफ भी भेजा Keeping गया u constant differentiating v plus यस keeping v constant differentiating u. यस। अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, तुम्हारा एग्जाम्स डिफरेंशिएशन के ऊपर है ना, तुम्हारा कैलकुलस के ऊपर एग्जाम्स है ना? हाँ स्टूडेंट्स, अभी मेजर टेस्ट में हाँ है ना? Yes, sir. तो अभी इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स, और ये इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम्हारे कैलकुलस में नहीं है, मॉड्यूल में एक क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन सर्कुलर मोशन चल रहा है, उसके अंदर हम कैलकुलस यूज कर रहे हैं। तो डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स, यू नीड टू नो दीज थिंग्स आल्सो प्रॉपर्ली। So please prepare yourself very properly and try to learn all the mathematical formulas also students. If I differentiate both the sides तो मैं क्या करूंगा सर? ऐसा करते हैं, इसको dv by dt लेता हूँ। पहले केस में मैं ओमेगा को कांस्टेंट रखूंगा, differentiating position vector with respect to time, यानी there is change in position with respect to time, plus differentiating angular velocity with respect to time, keeping position vector constant. यानी स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर मैं ओमेगा को कांस्टेंट रखूंगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, यानी ओमेगा कांस्टेंट है और पोजीशन ऑफ रेडियस वेक्टर गोज ऑन चेंजिंग। So change in position of radius vector, change in position of radius vector with respect to time, what exactly that is going to give me? Velocity, tangential velocity, dr by dt, plus what is rate of change of angular velocity is called? Students, what is rate of change of angular velocity is called? Angular acceleration. Students, जैसे कि d theta by dt कशिश ने ओमेगा बोला था, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी है रेडियन पर सेकेंड, वैसे ही angular acceleration is what? d omega by dt cross r. This is dv by dt, that is called as acceleration net. Now this is clear students? Students? Yes. Yes, sir. Using product rule पहले केस में ओमेगा कांस्टेंट है, differentiating position, यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? We are trying to change the position of the vector with respect to time, and that is going to give me velocity. Changing angular velocity with respect to time will give me angular acceleration. यहाँ पे r constant है। Students, what is omega into v? ओमेगा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा, तो ये कौन से, यानी ये क्या हो जाएगा? ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल होगा, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अ बॉडी टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर बॉडी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, NON स्टूडेंट्स, मैंने NON लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, देन द बॉडी विल हैव टू एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स। ये है तुम्हारा एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल और ये होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन टैंजेंशियल। दोनों एक्सेलरेशन मिला के इसको हम क्या बोलेंगे? नेट एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. देखो स्टूडेंट्स, ये बताता है कि बॉडी परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, दैट इज ओमेगा इज कांस्टेंट, यानी ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं है, यानी दोनों एक्सेलरेशन है, टैंजेंशियल भी है सेंट्रीपिटल भी है। तो टैंजेंशियल और सेंट्रीपिटल कभी होगा? जब भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है लेकिन मोशन नॉन यूसीएम है, तो ही। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्टूडेंट्स ओनली वन एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, अगर यूसीएम है स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म, डिड आई स्पीक अबाउट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, क्या मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताया है लास्ट लेक्चर्स में? Students, I'm asking you something. Riya,
Can you tell me? Because Kashish doesn't have book at all. Yes. Did I tell about UCM in the last lectures? Yes, sir. Okay, fine. So students, whenever the body is performing uniform circular motion, ध्यान से सुना students, the body covers equal angle in equal time. Equal angle in equal time. If it covers equal angle in equal time, then omega remains constant. If omega is constant, then there is no change in omega. Change in omega will be zero. Change in omega will be zero. What's the formula for alpha? Students, यहाँ पे देखो. यहाँ पे देखो alpha का formula क्या है students? What is the formula for alpha? d omega by. अगर ओमेगा कांस्टेंट है और डी ओमेगा जीरो होगा तो अल्फा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. अगर अल्फा जीरो हो जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू आर. तो कहने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा. अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन टेंजेंशियल, वो भी जीरो होगा. तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स कौन सा एक ही एक्सेलरेशन होना चाहिए? एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल और एक्सेलरेशन रेडियल, व्हिच इज वन एंड द सेम. कौन सा फोर्स होना चाहिए यहाँ पे? सिर्फ फोर्स सेंट्रीपेटल. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ योर? Yes, sir. Please students try to understand this. I'm not teaching one or two or three. मैं एक या दो या तीन को नहीं पढ़ा रहा हूँ. Students, all the students inside the group, do listen carefully, understand properly. कहाँ पे भी कुछ भी confusion हो तो please stop and ask. Don't just blindly accept it. अगर नहीं समझ में आता तो तुरंत मुझे बोलो कि सर ये पार्ट मुझे क्लियर करो वापस, क्योंकि एक दफे ये मिट गया उसके बाद में वापस नहीं होगा. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. You should know what exactly you're doing it. तो मैंने क्या किया स्टूडेंट्स? I've just picked up these two formulas जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. उसमें से मैंने एक फॉर्मूला लिया है, बॉडी को मैंने एंटी क्लॉकवाइज में मूव किया है. मैंने क्लियरली बोला है कि टेंजेंशियल टर्म्स, लीनियर टर्म्स विल बी अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज जे कैप. एंगुलर टर्म्स सारे पॉजिटिव जेड एक्सिस में होंगे, राइट हैंड स्क्रू रूल के हिसाब से सारे जेड एक्सिस पे होंगे. हॉरिजॉन्टली एक्स एक्सिस के ऊपर आई टैग के ऊपर तुम्हारा तीन फिजिकल क्वांटिटीज होगा. पोजीशन वेक्टर होगा, रेडियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, रेडियल फोर्स या एक्सेलरेशन फोर्स सेंटीमीटर, ये तीन चीज अलोंग एक्स एक्सिस होगी. फिर मैंने क्या किया? सर इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो v इक्वल ओमेगा बार क्रॉस आर बार. अभी ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, क्या ये करेक्ट वेक्टर फॉर्म में है? क्या ये वेक्टर फॉर्म में सही है? हाँ स्टूडेंट्स, तो तुम बोलेगा हाँ सर सही है ना. ये देखो ना, v क्या है सर? वेलोसिटी. वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे जा रहा है? देखो ना, वेलोसिटी कौन से एक्सिस पे जा रहा है? सर यहाँ पे देखो, ये है वेलोसिटी, दैट इज अलोंग y axis, so g cap. See, it's in y axis parallel to this. Students, as per right hand rule, what is j cap? K cross z. What is j cap? K cross z. K यानी कौन सा है? K is what we consider, sir, z axis. Omega will be along z axis, and what exactly we consider is, sorry, K cross I. Sir, I cap, no? And what exactly I will be equal to? Position vector. So J is equal to K cross I, so omega bar cross R. क्या ये clear हुआ students? कशिश clear हुआ अभी? Yes, sir. Riya, what about you? Yes, sir. Akash, what about you? Yash, Akash ne, Yash, what about you? Yash, Tejas? Yes, sir. Okay. The rest of them don't. Unesh, तेरा आइसक्रीम खत्म हो गया? उन्हें समझ में आ रहा? आइसक्रीम खा लिया? Yes, sir. ओके, क्या बात है. लेकिन फिर भी तूने फोटो नहीं भेजा. ओके, डजंट मैटर. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे फिर मैंने ये ले लिया, फिर इसको मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टूडेंट्स. तो फिर क्या किया हम लोगों ने? प्रोडक्ट रूल ले लिया. ओमेगा को कांस्टेंट का डी बाई डी टी को भी ले लिया. यहाँ पे आर कांस्टेंट है, डी ओमेगा डी टी विल बी अल्फा.
What is alpha into r is tangential acceleration, acceleration centripetal. यानी कभी भी पार्टिकल अगर नॉन यूसीएम करता है ना स्टूडेंट, दिस इज नॉन यूसीएम, तो हमेशा दो एक्सेलरेशन होते हैं. यूसीएम में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा, ये ध्यान रखना. और ये रीजन है यूसीएम का एक एक्सेलरेशन का. ना ये तुम्हारा एक्सेलरेशन नेट है. सपोज अगर इसी को मुझे फोर्स में लिखना है तो मैं क्या करूंगा? तो सिंपल ना, मल्टीप्लाई बाय मास, multiply by mass, multiply by mass of the body, mass of the revolving particle. So what is mass into acceleration will be force net. What is mass into acceleration centripetal? Force centripetal. What is mass into tangential acceleration? Force tangential. Is this clear? Yes, sir. Now if somebody asks me, can you tell me how to find out magnitude? So how do you find out magnitude of acceleration net? तो क्या बता सकता है? मुझे सिर्फ magnitude. Sir, square of ACP and square of AT. Very good. Under Lovely. root, under root, under root. Very good, Lovely. देखो, in spite of not attending lectures, see Lovely is answering students. Sir, it's not Labdi. Then who is this? It's me. Who's answering? It's Kashish. Okay, Kashish, you are answering. Yes, sir. वापस आज भी Lovely. Okay, so these students are renaming themselves. Okay, students, now listen carefully. तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ students, देखो तुम्हारा acceleration net, what she said it, acceleration net in magnitude will be equal to under root acceleration centripetal the whole square plus acceleration tangential the whole square. Agreed? यानी इसका स्क्वायर करना है, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर, इन दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर हो. अगर मैंने पूछा can you tell me what exactly the magnitude of force net होगा, तो इसमें क्या होगा? Force centripetal the whole square plus force tangential the whole square. Agreed? Is this much clear, students? Students, is it clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैंने पूछा can you tell me how to find out the direction of the resultant? यहाँ पे तुम देखो acceleration tangential जा रहा है along y axis ना, ये देखो पेन, और acceleration centripetal जा रहा है x axis पे. स्टूडेंट्स मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट कहाँ पे होगा? कैसे निकालोगे रिजल्टेंट? तो क्या करोगे तुम? Shift this vector parallel to itself. Can I use triangle of vector addition, students? ये देखो ना, if in case if I try to show it over here, ये तुम्हारा acceleration centripetal है, ये तुम्हारा acceleration tangential है. Agreed? Shift this vector parallel to itself. Tail, head, tail, head. Can I say what is the resultant? Students, tail of the first vector to the head of the second vector. ये हुआ तुम्हारा resultant. What exactly? Acceleration net is tangential plus centripetal. क्या ये clear हुआ? Triangle of vector addition से students. आया ना? Yes, sir. Only one student. What about the rest of them? बाकी सारे Yes, students. sir. Okay, Labdi is now Sir, saying. can you please explain it again? रिया, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो देखो दो एक्सेलरेशन है, एक टैंजेंशियल जा रहा है और एक रेडियल जा रहा है. ये तो तुम्हें दिखाई दे रहा है ना. ये चलो चलो ये मेरे को आंसर दो. ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? हाँ, इसका रिजल्टेंट कैसे होगा? अदर टू वेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग एट द टेल. हाँ रिया, Sir, अदर टू वेक्टर्स आर इंटरसेक्टिंग एट द टेल्स. yes, sir. So what is the resultant? The resultant of the two vectors is always along the diagonal of the parallelogram so formed. आया ना? हाँ. तो रिजल्टेंट यहाँ पे होगा. वो कैसे Okay. आएगा? इसी को शिफ्ट कर दो तो टेल है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर. तो ये मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा, देखो ना, ये जो मैंने लिखा है ना, ये देखो एक्सेलरेशन नेट इज इक्वल टू एक्सेलरेशन सेंटीमीटर प्लस एक्सेलरेशन टेंजेंशियल.
स्टूडेंट्स अगर तुम ये डायग्राम्स देखोगे ना तो ट्रायंगल लॉ से ये फॉर्मूला आता है और वही मैंने डेरिवेशन से भी आंसर लेके आया. Are you getting it, students? Yes, sir. Now can you tell me how to find out the direction of resultant? Suppose अगर मैंने यहाँ पे ये ले लिया होता phi, can you find out direction of resultant? Anybody? Somebody? At least one body. I wanted to find out students direction of the resultant. तो बता सकते हैं what is the direction of the resultant? Sir, between FT and FCP. डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. अच्छा चलो फॉरगेट अबाउट इट स्टूडेंट्स, ये सब भूल जाओ. मुझे पता चलो वेक्टर्स में जाता है स्टूडेंट्स. अगर मैंने दिया है वेक्टर p एंड वेक्टर q, ये वेक्टर p दिया है, ये वेक्टर q दिया है, एंड दे आर फॉर्मिंग एन एंगल थीटा. स्टूडेंट्स हाउ डिड वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट? किसी को फॉर्मूला मालूम है? हाँ स्टूडेंट्स. Sir, under root A square plus B square plus 2AB cos theta. एक पंच देना चाहिए ऐसा फोन में आते हुए. मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पूछा, मैंने डायरेक्शन पूछा. सर तो बी सीन अरे थीटा 10 का वाला ही तो क्वेश्चन. बता रही हूँ. क्या चिल्ला रही है ये स्टूडेंट्स? तुम लोग के कान दर्द नहीं हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या बता सर रहे बट थे? मैं तो वो रिजल्टेंट का ही बताई थी ना, A square plus B square plus 2AB cos theta. हे भगवान. स्टूडेंट्स टेल मी, इज शी राइट और रॉन्ग? आई टोल्ड यू टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट. इज शी राइट और रॉन्ग? हु इज आंसरिंग? ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पूछा. कशिश कशिश यस सर. ध्यान से सुनो, गलत मत बोलो. मैंने डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बोला. ओके सर, तो वो तो यूनिट नहीं नहीं वेक्टर में नहीं से नहीं निकलेगा ना. नहीं 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 नहीं. तुम्हारी फ्रेंड लब्धि भी अभी तुम्हारे साथ में नहीं है. वो भी बोलेगी कि हाँ कशिश तू गलत थी. लब्धि, was she wrong? यस. ओके. फ्रेंड्स मुझे बताओ, मैंने क्या पूछा था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, तो उसका फॉर्मूला बता सकते हो अभी कोई? कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा. स्टूडेंट्स क्या ये डायरेक्शन तुम लोग को याद है कि भूल गए हो वेक्टर्स में? हाँ स्टूडेंट्स. This is the resultant. Resultant over here is forming an angle phi with the horizontal. So what exactly I need to go for? Tan phi. What is tan phi? It's opposite upon adjacent. Opposite क्या होगा सर? ये सामने वाला tangential acceleration है. Adjacent क्या है? Acceleration centripetal. So can I say tangential acceleration upon acceleration centripetal? So what is phi? Tan inverse. So समझ में आ रहा है? हाँ students, how to find out direction of resultant for a body performing circular motion, but it's not uniform. It's non-uniform. Students, uniform circular motion का मतलब angle traced by the particle remains constant in constant time. Therefore, omega is constant. Speed also is constant. Direction of velocity goes on changing. If omega remains constant, change in omega will be zero. If change in omega will be zero, then d omega dt will be alpha. Therefore, alpha is zero. Angular acceleration is zero. If alpha is zero, then acceleration tangential is zero because tangential is alpha into r. If acceleration tangential is zero, then force tangential, which is mass into acceleration tangential, will be zero jayega. That means for a uniform circular motion, you will have only which acceleration? You will have only which acceleration? You will have only which acceleration? Only acceleration centripetal. ये तो zero हो गया. Or and which force? Only force centripetal. उनकी direction कहाँ से कहाँ है? From the particles towards the center. लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब स्पीड गोज ऑन चेंजिंग. Then at that instant, students will be having two accelerations, two force, and you can find out the direction of the result. क्या ये clear हुआ students? यस सर. Yes, sir. Just two students are saying it. What about the rest of the students?
Students, rest of Yes, sir. them. Yes, What sir. about? Okay. Who else? Who else? Abhishek. Abhishek, what about you? Amira Sheikh. What about you, Amira? Are you understanding, Amira? Abhishek. Anju, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Amira, तुम कहाँ थे, Amira? चेयर पे नहीं थे ना? सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। अरे वाह, देखा आप बेल मुझे मार। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज क्लियर नहीं है? हाँ स्टूडेंट्स? Students, can you hear me properly? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Amira saying that my voice is not proper. Amira, ऐसा मत करो ना प्लीज, चेयर पे बैठा सर करो ना। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ सर, सही में आपकी आवाज मतलब अटक अटक के आ रही है। अरे यार ऐसा मत करो अमीरा यार, everybody is able to hear me properly. सर अभी शायद देखो, फिर इधर नेटवर्क इशू होगा, इस वजह से हो रहा होगा। अरे यार लेकिन अभी तो कितना कुछ मिस किया तुमने। फिर देखो, अगर नेटवर्क इशू है तो इन स्टडीज के मामले में नेटवर्क को स्ट्रांग रखो स्टूडेंट्स। अगर सर अगर एक्चुअली मैं मेरे घर पे नहीं हूँ, मैं मेरे नानी के वहाँ आई हूँ, तो वहाँ पर नेटवर्क का इशू होता ही है, ओ माय इस वजह गॉड, से। क्या होगा इस देश का। A city like Mumbai, but still network is not strong. See, Amira, she's feeling that she's somewhere into a remote locality. देखा? In spite of students, Mumbai becoming the cosmopolitan, and Mumbai is paying the maximum tax. पूरे इंडिया में से सबसे ज्यादा मुंबईकर्स are paying the maximum tax. फिर भी यहाँ पे नेटवर्क वगैरह का इश्यूज हो रहा है। सर आपका मुद्दा हम हाई कोर्ट लेके चलेंगे। अरे क्या बात है, तू लीड करेगा उनेश? हाँ, तू लीड करेगा? Something which is wrong, it should not happen ना। इसलिए students try to use proper network in that case, and don't unnecessarily use your cell phones for other activities. Save your amount of data for your really good studies. सर डेटा का प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी होता है कि नेटवर्क आता ही नहीं है, मतलब वो सब जगह का प्रॉब्लम ही रहता है, सर्वर इश्यू रहता है, उसको कुछ भी हाँ कर लो सर। वो नहीं होता है। टचवुड मेरे यहाँ पे तो कभी हुआ नहीं है। ऐसा नहीं, कभी कभार तो एक आध दिन तो हुआ ही होगा ऐसा कि जब आपका कुछ भी नहीं चल रहा होगा, आपका सब एकदम ब्लॉक हो गया होगा। नहीं my dear, it's not like that. I have three units. I have it. This is personal only for this particular unit. I have it just next to my whiteboard. It's only for this room. Its center is different. That depends on you. How do you align yourself, students? How exactly you सर have a कभी कभी whiteboard? तो सर वाईफाई वाले की ऐसी गलती हो जाती है कि वो दिन दिन भर नेटवर्क ही बंद रखता है, उसको कॉल करके बोलना पड़ता है। Of course, they get frustrated ना, क्योंकि सब जगह पे सबसे फोन आते हैं। क्या करे students? देख तेरेसा वो अपना हाई कोर्ट में लेके जाएगा केस अपना। उनेश फारूकी। उनेश फारूकी इज गोइंग टू लीड अस। उनेश, है ना तू? आइसक्रीम खाया तूने? यस सर। हाई कोर्ट सैटेलाइट के साथ कुछ नहीं कर सकती है, इसके लिए हम लोग को नासा में जाना पड़ेगा। अरे तो नेटवर्क कंपनी को तो हम लोग केस कर सकते हैं ना, उस पे तो कर सकते नेटवर्क कंपनी की सैटेलाइट थोड़ी है। अरे बस अभी हो गया। अभी आफ्टर द लेक्चर्स तुम लोग डिबेट करना। कितना ये लड़कियां कितने ही डिबेट करती है ना उनेश। तो इतना टाइम कितना मिल रहा है? थोड़ी बोला था डिबेट करने के लिए। नहीं। हाई गाइस आर कोर्ट में जाके थोड़ी आराम से बात होती है, वहां पे भी डिबेट ही होती है। सर एक नारी सौ पे भारी वाला। guys are very sound. They hardly disturb things around it. He just give a suggestion, but that suggestion is to be considered or not, that is different. But the bottom line is it's all and all the things happening only because of Ambika. Okay,
Now students listen carefully. तुम्हारा 10 phi is opposite of an adjacent, so phi is equal to students tan inverse of 80 upon ACP. The students do keep it in mind for UCM and non-UCM. Now can anybody give me students, give me examples for uniform circular motion? Now students को example दे सकता है UCM के? So planets moving around sun. Okay, if the planets are revolving around the sun, so they perform uniform circular motion. For uniform circular motion, do you need any force? हाँ Labdi? No. Okay, Kashish, don't answer. Labdi's answering. Okay, tell me, is there any force required for a body to, for planets to revolve around the sun? Kashish is saying it. Sir, like, आपने क्या पूछा सर वापस बोल के? I said it करके कि Labdi should give an example that planets revolve around the sun. Labdi didn't give that example. So that's an example of uniform circular motion. So No, that's a sir, correct example. Labdi not. I have given the example. Okay, हाँ तो you have given the correct example, absolutely correct. तो लेकिन फिर मैंने पूछा करके कि do you need any force for UCM? Then somebody said it no. Who was that? That You was need. me. Okay, so that's why I told you, na Kashish. Students, you need Sir, force. that's Labdi, not me. Okay, fine. Okay, fine. So Kashish, do you need force for uniform circular motion? Yes, sir. There Which is force? gravitational force between sun and the planets. Okay, is gravitational force a real force or pseudo force? It's a real force. Very good. You're asking me or you're telling me? So I'm telling you it's real force. The way you answered, it was like a question mark. Okay, it is a real force, students. यानी students ये ध्यान में रखना. What Kashish said it करके कि planets revolve करते हैं around the sun. है uniform circular motion. Uniform circular motion के लिए मुझे real force चाहिए. वो कौन provide करता है? That is gravitational force of the sun. And gravitational force is actually the force centripetal from the planet towards the center. ये पहला example हुआ. Second example को दे सकता है? One more example. One more example. Students, fast. Electron moving around the nucleus. Very good. Electron revolving around the nucleus. What kind of motion this electron is performing around the nucleus? Is it UCM or non-UCM? UCM. Very good. Uniform circular motion. So again, for uniform circular motion, how many forces you need? Do you need 2 force or do you need only 1 force for UCM? So 2 force. Students, is she right or wrong? For uniform circular motion, she's saying it she needed 2 forces. Labdi is saying it 2 forces. Is it right or wrong? Students, for uniform circular motion, do you need 2 forces, isn't it? Yes, sir. One is centripetal from where at the center, and one is tangential where the electron moves. Okay, what is the formula for tangential force? Mass into acceleration tangential. Agreed? Yes, sir. Acceleration tangential is alpha into r. Agreed? Yes, sir. Alpha is d omega by dt into r. Agreed? Yes, sir. And in uniform circular motion, is omega changing? Omega is constant. Constant. So d omega will be 0. so alpha should be 0. so tangential acceleration should be Alpha into r, which is 0. so post tangential also should be 0. so how many acceleration it should have? Labdi? 2 acceleration or 1? 1 acceleration. देखा गया ना गलत? Students, nobody was bothered to correct her. Nobody was bothered to correct her. Even Kashish also was not correcting. Students, this is something wrong when I made it very clear that uniform circular motion में सिर्फ एक acceleration होना चाहिए और वो होगा acceleration centripetal. Non-uniform circular motion में tangential आएगा ना क्योंकि velocity goes on changing. Magnitude भी change होता है, direction भी change होता है. सर मैंने भी एक ही बोला 4 सेंटीमीटर. नहीं, तुमने दोनों बोला. नहीं दोनों बोला. सर.
Oh God, she's so lying. She's cheating. अच्छा Oh my स्टार्टिंग में God. दोनों बोला था सॉरी Let me ask Unesh. Unesh, are you listening to me, Unesh? यस सर। उसने एक ही फोर्स बोला था या दोनों फोर्स बोले थे तब स्टार्टिंग में? स्टार्टिंग में दोनों बोले थे, मैं खुद ही बोल सर, रही हूँ। तो फिर गलत जा रहे हो ना, ऐसे मत हाँ करो सर। ना। अरे दूसरे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। वो अमीरा कितना एकदम कंसंट्रेशन से वो सुनना चाहती है, उसके यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं है और उनेश फारूकी केस करने वाला है। उतना सर तक बट हाइट पे जा स्टूडेंट से रहा है डिस्कशन हाइट तक जा रहा है, लेकिन तू गलत आंसर देके यू आर ट्राइंग टू कंफ्यूज स्टूडेंट्स। डोंट डू लाइक दैट। why should students listen to me? They should listen to you. I am just answering some questions which you could be your answer is incorrect. yes, Incorrect which may answers are be not to be incorrect. So So they incorrect don't. answers are not to be appreciated in that case. It has to be condemned, and if I start condemning to a great extent, it's not good. So somewhere or the other, you should try to give correct answers so that the rest of the masses also should be able to catch up much more easily. This is not done. ऐसे नहीं करते, ये बहुत गलत बात है. So to make it to proof, I had to go the reverse and then I had to go in this. और सामने पूरा आंसर लिखा हुआ है, सामने आंसर लिखा हुआ था. So second example, student, she gave it that electron is revolving around the nucleus performing uniform circular motion. उस टाइम पे सिर्फ एक ही acceleration होगा, सिर्फ acceleration centripetal होगा, ये होगा ही नहीं. एक ही force होगा, force centripetal. Now can you tell me, Kashish, who's providing the force centripetal in this case? Electron revolving around the nucleus. अभी सही आंसर देना. Who is providing the force centripetal for electron revolving around? Nucleus. Anybody Fine. else? Anybody else? Students, you all have learned it in structure of atom chemistry में पढ़ चुके हो students. Bohr's atomic model पढ़ चुके हो ना? हाँ students, Bohr's postulates पढ़े हो कि नहीं पढ़े? हाँ students, बताओ students, Bohr's atomic structure के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Bohr's postulates पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? Tell me in chemistry. Students, I'm asking you all. Electron revolve around the nucleus of an atom of an element performing uniform circular motion. For uniform circular motion, it needs force centripetal, and that force centripetal is provided by the electrostatic force of attraction between the electron and the positively charged nucleus. तो कौन सा फोर्स है वो? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है. तभी जाके तुमने बोर फर्स्ट पॉस्टुलेट के नीचे तुमने ये फॉर्मूला देखा होगा, mv²/r is equal to 1/4πε0 फिर तुमने बोर्ड सेकंड पॉस्टुलेट पढ़ा होगा, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π. फिर थर्ड पॉस्टुलेट पढ़ा होगा, डिफरेंस इन द एनर्जी लेवल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन टू ऑर्बिट्स इज इक्वल टू h टाइम्स न्यू. स्टूडेंट्स, मुझे बताओ ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? रिया टेल मी. रिया टेल मी. No, sir, I haven't. Because I haven't attended those lectures. Structure of atom is done, na? Yes, sir. So nobody else knows it. Akash, can you tell me? Labdi, can you tell me? Labdi, are you there? तो किया है कि नहीं किया ये? किया है सर. तो क्यों अभी नहीं याद आ रहा यार? वही चीज वापस फिजिक्स में रिपीट हो रही है, फिर तुम नहीं क्लिक कर सकते हो यार. दिस इज समथिंग रॉन्ग. और फिर बोलते हो कि मुझे क्यों सुनते हो, मुझे नहीं सुनना चाहिए. Then you should never speak it out at all. You should be keeping mum into the lectures. No need to speak out a word. Henceforth, Kashish, no question will be asked to you. You don't reply at all. You do not answer at all now. You zip. I don't want you to open your mouth. If this is a way of approach towards studies, yes. सर अभी इतनी आर्गुमेंट मेरे साथ ही तो की आपने. Yeah.
Now you're not going to, because you feel like that you are answering, and if your answer is wrong, why people are listening to it? It's not good. And when I asked you for structure of atom, that time you don't speak it out. And things were done to you. It's not like it's not done. I'm saying that part of it. And there's not much argument. This was just simply regarding your concept. The last example, students, if I speak about moon, do moon revolves around the earth? Yes. What kind of motion moon performs around the earth? So will it be UCM or non-UCM? What will be the answer? Moon revolving around the earth. And it's a natural satellite. There are artificial satellites also revolving around the earth. What kind of UCM? Uniform circular motion के लिए फिर do you need a pseudo force or do you need real force? Students, do you need a real force or do you need pseudo force? Of course, you need a real force, and that is centripetal force. Real force is centripetal force. Who's providing the force centripetal in this case? Moon जब भी revolve होता है around the earth, so who's providing the centripetal force? Yes, anyone? Earth. Absolutely correct. Sakshi, the gravitational force of the earth. You should say gravitational force of the earth. यानी स्टूडेंट्स ये जो एग्जांपल्स मैंने पूछा ना यूसीएम में, ये ध्यान से सुनना. जब भी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज द सेंट्रिपेटल फोर्स एंड द मोशन इज यूसीएम. जब भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, then the centripetal force is provided by the electrostatic force, और वो centripetal force है. जब मून नेचुरली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मोशन यूसीएम ही है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स. ये सारे किसके एग्जांपल्स थे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. Can anybody give me examples of non-UCM? Anyone? Yes, anybody? Non-uniform circular motion. Example. Sir, giant wheel. Absolutely correct. So what is happening in that? Does the velocity, magnitude of velocity goes on changing? Does the magnitude of velocity goes on changing in a giant wheel? Vertical circular motion? अरे have you all been to Infinity Mall? मलाड का Infinity Mall पे गए हो तुम लोग कभी? Yes, sir. तो वहां पे रोलर कोस्टर है ना, ऐसा ट्रेन वाला ऐसा रोलर कोस्टर है कि नहीं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन? Yes, sir. होगा sir. है ना, पूरा उल्टा हो जाता है लेकिन फिर भी गिरता नहीं है. यानी उसको एक सफिशिएंट वेलोसिटी देता है ना, क्योंकि जब भी वो ट्रेन ऊपर तक जाके फिर रुकती है, फिर उसको एकदम अच्छी वेलोसिटी मिलती है. जैसे वो एकदम परफेक्ट वेलोसिटी मिलेगी, इट्स गोइंग टू कंप्लीट वन फुल वर्टिकल सर्कल. तो वहां पे स्पीड गोज ऑन चेंजिंग एट ईच इंस्टेंट, तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. एंड स्टूडेंट्स, वर्टिकल सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूसीएम. एंड नॉन यूसीएम होगा तो दो एक्सेलरेशन, दो फोर्स. ये ध्यान में रखना, इनका मैग्नीट्यूड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उनका डायरेक्शन ये होगा फी tan inverse. Students, I'm erasing it, but this was a lot of information I've put forward. But there are certain people who are saying it gets more of argument. Are you getting it? And when problems are going to be asked, see how many people are able to answer. Take it from me, after another 2 hours, you'll be forgetting all the formulas. So many things I've written it over here. Just now in front of me itself, only the things were going incorrect. What about after a few hours?
And don't claim like that कि only you and your friend answer, please. Okay, Sakshi, there are other people, sorry, Ganesh, there are other people also in the group who are answering. And if you don't want to answer, it's your wish. Okay? Nobody is asking in that case. Other people are there who are answering. Okay, students, we learned about UCM, we learned about non-UCM, यानी basic ध्यान में रखना students. Circular motion में velocity vector और position vector हमेशा mutually perpendicular होता है. Direction of velocity change होता है क्योंकि position vector का direction change होता है, उससे हमें एक centripetal acceleration create होती है. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन गोज ऑन चेंज होता है तो वहां पर मुझे टैंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है. Getting it? Because there is change in magnitude also associated with it. So change in magnitude, the answer is no. Change in magnitude of velocity will lead to tangential acceleration. And when magnitude remains constant, it will have centripetal. But at the same time, centripetal is required for UCM as well as for non-UCM. Force is required for UCM as well as for non-UCM. Now we try to go for the correct mathematical way of approach. How to get the formula for acceleration centripetal. Students, let us understand that. This is actually going with respect to vector form. Students, please pay attention. Suppose अगर मैंने कोई body को लिया है, let us say a particle is performing uniform circular motion. Okay, I'm taking a particle performing uniform circular motion. Okay. This is x-axis. This is y-axis, students. और ये center है. The particle is performing uniform circular motion. अभी हम ये कहते हैं कि particle को मैं कहाँ पे ले रहा हूँ, students? Listen carefully. Think as if I'm taking the particle to be at point P, students. Okay. तो ये होगा उसका position vector, students. तो मुझे पता पार्टिकल P सर्कुलर मोशन है and it's in an xy plane, तो उसके कोऑर्डिनेट्स तुम बता सकते हो? तुम बोले हाँ सर थीटा कॉमा आर मैंने लिख दिया. मुझे पता स्टूडेंट्स इसके कोऑर्डिनेट्स थीटा कॉमा आर, ये कौन से कोऑर्डिनेट्स हुए? हाँ स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट स्टूडेंट्स. यानी पार्टिकल P परफॉर्म कर रहा है यूसीएम XY प्लेन में, तो मैं चाहता स्टूडेंट्स उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दे सकता था, लेकिन मुझे वो नहीं देना है. मैंने ये बोला है कि पार्टिकल P स्टूडेंट्स इट इज एट एन एंगल थीटा with the horizontal, that is with I cap, and the distance of the particle from the center of the circular path is r. इसलिए मैंने उसको क्या किया, थीटा कॉमा आर को मैंने रिप्रेजेंट किया. इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Now suppose if I happen to go for formula for acceleration and distance, मुझे formula for acceleration centripetal चाहिए स्टूडेंट्स. तो मुझे centripetal acceleration कैसे मिलेगा? ये देखो acceleration centripetal का फॉर्मूला स्टूडेंट्स करेक्ट वेक्टर फॉर्मूला लिखोगे ना तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होगा. अभी तो ये मैंने डिराइव नहीं किया, लेकिन मैंने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है. जैसे मैं फॉर्मूला लिखूंगा ना तो कोई भी थोड़ा सा भी स्टूडेंट वाइज होगा ना वो बोलेगा सर वेक्टर फॉर्म में तो सर आपने एकदम सही लिखा है. क्यों सही लिखा है? तो तुम सबसे पहले बोलोगे सर पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज में, और अगर सपोज आपने पार्टिकल को यहाँ पे लिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर किस तरफ दिखाएगा, है ना? सेंटर से तुम दिखाओगे. लेकिन सर उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल किस तरफ जा रहा है? सर उसका एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल तो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा. तो स्टूडेंट्स देखो ना, दोनों के बीच में क्या है, दोनों वेक्टर्स है. एक सेंटर से पार्टिकल की तरफ जा रहा है और सेंट्रीपेटल. स्टूडेंट्स व्हाट एग्जैक्टली मीन बाय द टर्म सेंट्रीपेटल? द वर्ड सेंट्रीपेटल का मतलब centrally seeking, radially inwards. That's what it means.
ये है सेंट्रीपेटल का मतलब। और स्टूडेंट्स मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैव लर्नड इट लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन के अंदर जब तुम क्लासिफिकेशन करते हो ना स्टूडेंट्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ फोर्सेस, रियल फोर्सेस, जीरो फोर्सेस। रियल फोर्सेस के अंदर एग्जांपल आता है तुम्हारा सेंट्रीपेटल फोर्स, और जीरो फोर्स में एग्जांपल आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो रियल फोर्स फिर फर्दर क्लासिफाई होता है तुम्हारे कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। और कहाँ पे पढ़ा सब कुछ? लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, मैं इतना फास्ट क्यों बोला, जानबूझ के उतना फास्ट बोला क्योंकि वो हो चुका है तुम्हारे साथ में लॉज ऑफ मोशन। आई एम गोइंग फॉर माय टॉपिक। अभी ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ से तुम्हें पता चलता है, अरे हाँ सर पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ पे दिखा रहा है, यानी पोजीशन वेक्टर अगर मेरा हाथ ऐसे दिखाऊंगा तो एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल ऑपोजिट जा रहा है। सर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा रहा है। हाँ ये ऑपोजिट डायरेक्शन है। ये बताता है कि एक्सेलरेशन सेंट्रीपेटल एंड पोजीशन वेक्टर आर anti-parallel, opposite direction। अभी मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है, देखो डिराइव करते हैं। Friends, can I resolve this vector R? Friends, can I resolve this vector R into two components? Two components. One is Rx and one is Ry. Of course, by triangle of vector addition, friends, by triangle of vector addition, can I say tail, head, tail of the first vector to the head of the second vector? Why not? Using triangle of vector addition, can I say R bar? Friends, can I say R bar is equal to Rx bar plus Ry bar? ये देखो स्टूडेंट्स, ये Rx है, ये Ry हुआ, टेल है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर टू हेड द सेकंड वेक्टर, ये रिजल्टेंट हुआ। ये Ry मैंने Ry सामने लिया है, ये Rx है, ये मेरा Rx है, और ये Ry है। फ्रेंड्स इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. ये पूरा वेक्टर्स के हिसाब से जा रहा है स्टूडेंट्स, and those who are good in vectors will be able to catch it। ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है स्टूडेंट्स, ये ट्रायंगल लॉ मैंने लिया। नाउ कैन आई राइट ऑन दिस इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर? हाँ सर, सर component of r along x axis will be r cos theta I cap, component of vector along y axis will be r sin theta j cap। ये मैंने यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखा। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Rx and Ry? Students, is it clear or not? Yes, sir. नहीं हुआ? हाँ सर, yes sir. इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ अभी। लेट मी डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टूडेंट्स अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या मिलेगा? सर सिंपल ना, डिफरेंशिएट करो ना, dr by dt हो जाएगा। ओ यानी सर ये होगा चेंज, ध्यान से सुनना, चेंज इन, ध्यान से सुनना, चेंज इन। स्टूडेंट्स ये जब भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है? हाँ बताओ स्टूडेंट्स, जब भी पार्टिकल यहाँ पे है या पार्टिकल यहाँ पे है या पार्टिकल यहाँ पे है या पार्टिकल, तो क्या उसका रेडियस वेक्टर चेंज हो रहा है? हाँ स्टूडेंट्स, उसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है? नहीं सर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज कहाँ से हो रहा है? हाँ लेकिन क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है? हाँ सर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। तो जब भी तुम इसको रीड करोगे तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर, change in direction of position vector with respect to change in time will give me velocity instantaneous at that time। Students, dr by dt will be equal to v, rate at which change takes place। Now if I go for differentiating r cos theta I cap, students ये तो u plus v मेथड होगा। कैलकुलस की एग्जाम्स आ रही है स्टूडेंट्स, कैलकुलस की एग्जाम्स आ रही है। डिफरेंशिएटिंग r cos theta I cap with respect to time, तो क्या करोगे? Anybody can tell me how to differentiate this? चलो let's see how much is the preparation is going on now। Differentiate r cos theta I cap plus r sin theta j cap with respect to time, u plus v method। कोई बता सकता है? जल्दी जल्दी। Sir, r उमेश, minus sin theta plus r cos theta। अभी क्यों ऐसा कर रहे हो यार?
क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? ये थीटा भूल गया ना तुम? हाँ चलो चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। लवली, क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू साइन x। मैंने पूछा फाइंड dy बाई dx। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा y इज इक्वल टू साइन थीटा, डिफरेंशिएट dy बाई d थीटा। तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला है y इज इक्वल टू साइन x, डिफरेंशिएट साइन थीटा, डिफरेंशिएट dy बाई dx। हाँ, और वो तो वही क्वेश्चन है पर हाँ, इधर है ये और ये, चलो चेंज कर दिया मैंने। हाँ बताओ अभी कैसे करोगे? कैन यू सॉल्व दिस एनीबॉडी? Sir, y is equal to sin x का y इज इक्वल टू sin x, तो डिफरेंशिएट dy बाई dx, इसका आंसर क्या होगा? सर cos x एब्सोल्युटली करेक्ट बात है, इंटेलिजेंट स्टफ यहाँ पे। सर cos d d theta upon dt dy बाई d थीटा चाहिए मुझे। आई वांट टू डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। सर cos थीटा, हाँ cos थीटा cos थीटा या माइनस साइन माइनस cos थीटा, प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा। minus नो माय डियर, इट्स प्लस cos थीटा ओनली। स्टूडेंट्स अगर मुझे शॉक मिल रहा है यार, ऐसा मत करो। डिफरेंशिएटिंग sin थीटा विल बी प्लस cos थीटा। आई गेटिंग इट? अभी यहाँ पे बताओ y इज sin थीटा डिफरेंशिएट dy बाई dx, तो क्या होगा? सर dy फर्स्ट बाई d थीटा का आंसर cos थीटा ही होगा। ऑफ कोर्स आई एम डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू थीटा ना, तो cos थीटा ही आएगा बस। नीचे देखो ना d थीटा लिखा है मैंने। यहाँ पे इन d थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 है। यहाँ पे dx आता है, वो भी कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। इसलिए मैंने नहीं बताया। यहाँ पे क्या होगा? y इज sin थीटा डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx। तो पहले तुम y को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, और फिर थीटा को डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। यानी ये होगा dy बाई d थीटा इंटू d थीटा बाई dx। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? यस सर। ये क्या है? इसको हम क्या बोलेंगे? चेन चेन रूल रूल। डेरा। भूल गए ना स्टूडेंट, सब कुछ भूल गए यार। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। उनेश आइसक्रीम खा लिया? उनेश आई देयर? उनेश देखा चला गया, वो भी थक गया। ये बंदा कितना पढ़ाता है यार। यस ही रियली वेंट। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम is. These students should never be picked up into the lectures. And the reason for them will be what, you know? Network. My net is not fine. यही रीजन होता है। अमीरा are you there? अमीरा तुम हो लेक्चर्स में कि नहीं हो? अमीरा are you there? अभी वो भी नहीं है। वो बोलेंगे कि सुनाई नहीं दे रहा है मुझे बरोबर, है ना? अमीरा are you there? See, this is the problem bus. And the reason they'll say that there is no network.
ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो dy by d थीटा क्या है? सर dy by d थीटा क्या है? cos थीटा। पीछे क्या आएगा? आया ना d थीटा by dx, यानी ये रहेगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारा r इज इक्वल r cos थीटा है क्या? मैंने पूछा स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू t, तो तुम पहले r को थीटा से डिफरेंशिएट करोगे, थीटा टू t से डिफरेंशिएट करोगे, चेंज रूल इन डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे क्या होगा सर? डिफरेंशिएटिंग r cos थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट सर? r कांस्टेंट है, डिफरेंशिएटिंग cos थीटा क्या होगा? माइनस sin थीटा आएगा, आई कैप तो आएगा, लेकिन पीछे क्या है? d थीटा बाई dt होगा सर। क्या समझ में आया ये पार्ट? हाँ स्टूडेंट्स, यस सर। ऐसा मत बोलो प्लीज स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट थिंग्स लाइक दैट, अदरवाइज यू विल बी टू अ मेस। और चेंज और इन डेरिवेटिव्स के क्वेश्चंस अच्छे खासे दिए हैं और हमने किए भी है, ऐसे नहीं कि नहीं किए, बहुत मेहनत की है सारे चैप्टर्स के अंदर। सर अभी वही करना पड़ेगा, पूरा कैलकुलस का फिर से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करना पड़ेगा इन सेंस, यानी रेगुलरिटी होनी चाहिए ना माय डियर। अगर तुम रेगुलर नहीं रहोगे ना, प्रॉब्लम नहीं आती है। स्टूडेंट्स ये ध्यान से सुना, अभी मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मे बी वॉट एवर यू कॉल इट एज एन आर्ग्यूमेंट और वॉट एवर इट इज, बट वॉट एवर माई टॉक्स विद योर विल बी स्टूडेंट्स, इट्स मोर ऑन टू मेक यू रियलाइज कि व्हाट एग्जैक्टली आर डूइंग विद योर स्टडीज। स्टूडेंट्स लेट मी आस्क यू, सो मेनी लेक्चर्स यू आर टेकिंग इट है ना वीक के अंदर, टेल मी हाउ मेनी टीचर्स आस्क योर क्वेश्चंस? मुझे ये बताओ, चलो, रेजिंग क्वेश्चंस ऑल द टाइम, पीछे जहाँ हाथ धो के ना धो के कपड़े पहन के पीछे गिरते क्वेश्चंस के लिए। जैसे यहाँ पे मैं सोया हुआ रहता तो फिर भी उठाता हूँ, सोते वाले को भी उठा रहा हूँ। अभी देखो कब से चिल्ला रहा था उनेश को, और वो है ही नहीं लेक्चर में। अमीरा को कब से चिल्ला रहा हूँ, लेकिन वो भी नहीं है लेक्चर में, और उसका रीजन क्लियरली पता है, वो बोलेगी कि मुझे सुना ही नहीं दे रहा है। So tell me how many teachers ask your questions quite often in a lecture? Two teachers asked. No, three, four. CRM sir also asked, Sachin sir also asked, our biology teacher also asked. लेकिन how many of you all reply to them? How many of you all reply? Just one or two? जितने यहाँ रिप्लाई करते हैं उतने वहाँ पे भी रिप्लाई करते हैं। So mostly in your lectures. लेकिन see now somebody saying in mostly in your lectures, Riya, I don't know now Riya whether you are correct or incorrect, but somewhere or the other I feel like that students जब तक questions नहीं पूछोगे ना, students are literally sleeping. They don't know what is happening inside the lectures. अगर मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली मैं खुद ही आंसर दे देता, मैं आगे बढ़ता भी नहीं था, मैं यहाँ पे भी नहीं जाता। लेकिन मुझे एक गलत आंसर मिला स्टूडेंट, जिसके लिए मैंने डिफरेंट, मुझे गलत आंसर मिला तो तुरंत मेरा पूरा इसके ऊपर चला गया। But it's good that somebody answered. When somebody answered, gave an incorrect answer. Yes, now it's rectified. अभी ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, और जब एग्जाम नजदीक आ रही है तो उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अभी इसको डिफरेंशिएट करो स्टूडेंट्स, r कांस्टेंट होगा, व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग sin थीटा cos थीटा, j के पास है, पीछे क्या आ गया? d थीटा बाई dt हो गया, dr बाई dt को भी लिख दिया, ये r यहाँ पे आ गया, नेगेटिव साइन आ गया आगे, ये r। स्टूडेंट्स व्हाट इज d थीटा बाई dt? कैन यू टेल मी what is rate of change of angular displacement with respect to time is called? Anybody? Students, what is rate of change of angular displacement is called? Yes, Amira, can you tell me what is rate of change of angular displacement is called? Amira, can you tell me? सर कहना है हाँ बोलो। सर ओमेगा। Absolutely correct. And what is omega called as? What is that called? एंगुलर वेलोसिटी। Angular velocity. Agreed. Into sin theta I cap plus r. Yes, Amira, you are not there in the lectures. What is d theta by dt is called? Amira, what is d theta by dt is called? Amira, what is d theta by dt is called?
She left. This is what the problem is. It's called as angular velocity, students. तो ओमेगा बार आएगा, ये आएगा cos थीटा एंड जे कैप। स्टूडेंट्स ये होगा तुम्हारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। मुझे क्या चाहिए? मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। स्टूडेंट्स, कैन आई गो फॉर डिफरेंशिएटिंग dv by dt? Yes. Now students, differentiate the last term. So let us go for differentiating dv by dt. What is the answer? बता सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का आंसर क्या होगा? स्टूडेंट्स को बता सकता है? तो देखो, ये माइनस साइन कांस्टेंट होगा, ये r कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स, व्हाट इज डिफरेंशिएटिंग sin थीटा? इज इट प्लस cos थीटा or minus cos थीटा? Plus cos theta. Very good. Into what? d theta by dt I क्या, है ना? ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्यों? बिकॉज डिफरेंशिएटिंग cos थीटा विल बी माइनस sin थीटा। तो माइनस मैंने आगे लिखा है, r ओमेगा sin थीटा वापस d थीटा बाय dt j कैप होगा ना। अगर तुम इसको देखोगे, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड? स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड? एक्सेलरेशन। कैन आई से ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है? क्या मैं नेगेटिव को बाहर निकाल सकता हूँ? क्यों नहीं? ये क्या है? व्हाट इज d थीटा बाय dt? ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा इनटू ओमेगा? ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज d थीटा बाय dt? ओमेगा। व्हाट इज ओमेगा इनटू ओमेगा? ओमेगा स्क्वायर। मैंने बाहर निकाल दिया। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? व्हाट एग्जैक्टली ब्रैकेट में मैं लिखूंगा? सो ब्रैकेट में आएगा r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप। Students, what is r cos theta I cap? Students, what is r cos theta I cap and r sin theta j cap? R cos theta I cap, r sin theta j cap, what is that? आ गया तुम्हारा आंसर? Position. This is what the answer is. And this becomes a formula for acceleration centripetal. क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Students, यानी तुम्हें क्लियरली पता होना चाहिए कि सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कब भी होगा जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, उस टाइम। और उस टाइम पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंज, इस डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर गोज ऑन चेंजिंग, उससे हमें वेलोसिटी मिलेगा। और यहाँ पे अगर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड व्हाट इज द कॉज फॉर दिस? दैट विल गिव मी एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल। इसका डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है? फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर। पोजीशन वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट। ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पे क्या है? तो सिंपल, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है। इसलिए आपने बोला ना मोशन यूसीएम है। यस, देखो मैंने पहले बोल दिया था यूसीएम के लिए हम पता। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Friends, is it clear? Friends, is it clear to all of you all? Yes, sir. Can I erase it? क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ अभी? Sir, just a minute. Okay.
So screen not showing. What happened? Somebody saying something? In between your screen disappeared. So someone is saying that screen is not visible. Screen is not visible. Sir, in between. Now it is visible. Oh my dear, it's always visible. So there might be some network issue on site. Students, is it disappearing all the time? So am I saying that no, it's not disappearing at all? I don't know why is it so people are feeling it. Sir, there might be some network issue on their end. No, my dear, ऐसे नहीं हो. Yes, I'm waiting for your students. Completed? Okay, completed. Students completed. What happened? There is no network or what? What exactly is happening? Done, sir.
So what kind of motion the body is performing? Then you will say, sir, the body is performing uniform circular motion. अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, यहाँ पे अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स, V बार एंड R बार आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. हाँ या ना स्टूडेंट्स? ये क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? V and R are always mutually perpendicular students for body performing circular motion students. क्या ये क्लियर है सबको? Yes, sir. तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर स्टूडेंट्स तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? व्हाट इज आंसर ऑफ द डॉट प्रोडक्ट? तो बता सकता है क्या आंसर होगा? 0. 0. क्या तुम इसको बता सकते हो, प्रूव कर सकते हो? तो तुरंत तुम बोलोगे हाँ सर क्यों नहीं, ये देखो ना आर का फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, V का फॉर्मूला है. सी अगर मैं V डॉट आर लिखूं स्टूडेंट्स, इफ आई वांट टू फाइंड आउट V डॉट आर का आंसर, तो व्हाट इज V? V इज दिस, दिस इज माइनस R ओमेगा sin theta I cap plus R omega cos theta J cap dot, what is R? R cos theta I cap plus R sin theta J cap. Students, can you find out the dot product? Yes. What is dot product? Can the students, what have we learned? What is I dot I? What is J dot J? What is K dot K? Students, can you give me an answer? What is I dot J? J dot K? K dot I? What is the answer? तो बता सकते हैं students? Students, what is the answer of these? I dot I, J dot J, K dot K? 1. 0. It's 1. Who said it's 0? It's wrong. ये है 1. I dot J, J dot K, K dot K dot I का आंसर क्या होगा? Yash? 0. Absolutely correct. Friends, Yash is one of the student. I've seen him. मैंने ये देखा है करके ये बहुत ही साउंड है, अपने आप को ज्यादा पोर्ट्रे नहीं Sir? करेगा. Yes. So there is a network issue on my end. So can I leave the group and rejoin? Oh my God, Riya. Oh God. अभी भी नहीं क्लियर है? हाँ, वीडियो वगैरह नहीं दिख रहा है, आवाज सुन नहीं दे रहा है, तुम्हें जाना ही है बाहर. हेलो रिया, यू देयर? Sir, हाँ बोलो रिया, बोलो. रिया, ये क्या हो रहा है आज? नेटवर्क इश्यू सबका क्यों हो रहा है इतना? Okay, students. So he has given the answer, students. Okay, Yash has given the answer, students. तो ये आंसर तुम्हारा 1 होगा और ये 0 होगा. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, कहने से ये I को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, मुझे बताओ I डॉट I का आंसर क्या होगा? 1. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स? इक्वल टू माइनस साइन R स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा कॉस थीटा और व्हाट इज I इनटू I? 1. तो इसका मैं क्या करूंगा? प्लस इंटू प्लस प्लस होगा. ये देखो J इंटू J 1, J इंटू I विल बी 0. स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 टर्म्स है और यहाँ पे 2 टर्म्स है, टोटल 4 टर्म्स होने चाहिए. रिया, होप यू आर बैक. sorry, sir. Actually, there was a network issue. क्या सबका नेटवर्क इश्यू हो रहा है, तभी जाके स्टूडेंट्स धनाधन 27 स्टूडेंट्स में से 20 स्टूडेंट्स नाउ आर लेफ्ट. Sorry, sir. Actually, you were not audible nicely. That's why. या आई नो दैट सबका ये प्रॉब्लम चल. अभी यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये 2 टर्म्स है और ये 2 टर्म्स है, तो 2 2 सा कितना होना चाहिए? 4 टर्म्स. देयर शुड बी 4 टर्म्स. तो यहाँ पे I डॉट I का आंसर 1 होगा, I डॉट J का आंसर 0 होगा, J डॉट I का आंसर 0 होगा, J डॉट J का आंसर 1 होगा. तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 होगा. तो क्या होगा? R इंटू R क्या हो जाएगा? R स्क्वायर ओमेगा साइन थीटा cos theta. What is J into J? 1. Now students look over here. I want V dot R का आंसर ना, V dot R का आंसर निकाल रहे हैं हम लोग. ये देखो ये पूरा नेगेटिव में आ रहा है और ये पूरा पॉजिटिव में आ रहा है. स्टूडेंट्स क्या ना है? These are identical equations. दोनों कैंसिल होगा. What's the answer? हुआ क्लियर?
Students, यहाँ से पता चला B and R are mutually perpendicular, students. Students, Yes, sir. is it clear? The students are bodies performing uniform circular motion. Students, direction of velocity goes on changing. Your velocity and position vector are mutually perpendicular to each other. If the magnitude of velocity remains constant, it's UCM. If magnitude is not constant, it is non-UCM. If it's uniform circular motion, it will have only one acceleration and one force, that is centripetal acceleration, centripetal force. But if it is non-uniform circular motion, it has two acceleration, centripetal, acceleration tangential. It has two forces, force centripetal, force tangential. Therefore, there will be net acceleration. The direction of net acceleration will be phi equal to tan inverse acceleration tangential upon acceleration radial. The formula for acceleration centripetal in correct vector notation is minus omega square into r. That shows that position vector and acceleration centripetal, both of them are in opposite direction. Since we say that B and R are mutually perpendicular, therefore the dot product, we can prove it simply equal to 0. Erase कर दो students इसको. Students कर दो erase. So 1 minute. Okay. मुझे लगा कि वापस क्या हो गया. Done, sir. Okay, students. Now, students will be going for the first mathematical relation for body performing circular motion, students. And this is, we can see that is maximum velocity. Students, we are trying to go for maximum velocity for a car. Moving on a circular unbanked road. Since we are trying to find out the formula for maximum velocity for a car moving on a circular unbanked road, okay, considering, students, friction, which is actually the cause for car to be held firmly onto the road. Since यहाँ पे हम consider कर रहे हैं friction,
Now please pay attention. Maximum velocity for a car moving on a circular unbanked road considering friction. Okay, and so that friction is actually the cause. Okay, cause for car to be held firmly on the road. So इस कार को रोड के साथ में ग्रिप में लेके आने के लिए फ्रिक्शन प्ले करता है. Now let us understand that, students. If in case if you try to take in this manner, students, let us say ये एक circular track है, students, और यहाँ पे तुम्हारी कार है और वो कार परफॉर्म कर रही है circular motion. Okay, यह है center of the circular path. Students, this is the center of the circular path. And this is a line joining the center of the circular path and the center of gravity of the car. Now, can anybody get me the relation for this? Now, students. Can you get me the relation for this? A car moving on a circular unbanked road considering friction. तो कैसे करोगे? तो स्टूडेंट्स, ये जो कार सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है किसकी वजह से कर रही है? तो तुम क्या बोलोगे सर? फ्रिक्शन की वजह से, यानी फ्रिक्शन एक कॉज है. स्टूडेंट्स ध्यान से सुना, फ्रिक्शन एक कॉज है. फ्रिक्शन क्या है? स्टूडेंट्स, व्हाट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? Students, force of friction, so called static friction, ये है क्या? सर ये एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है. हेलो, एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है. और जब भी मैंने बोला कि कोई भी अगर बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो हमें कौन सा फोर्स चाहिए? हमें रियल फोर्स चाहिए. स्टूडेंट्स, हमें रियल फोर्स चाहिए. रियल फोर्स का नाम क्या है सर्कुलर मोशन में? फोर्स सेंट्रीपेटल. तो ये रियल फोर्स यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, व्हिच इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स. रियल फोर्सेस होते कौन से स्टूडेंट्स? रियल फोर्सेस होते कौन से? रियल फोर्सेस आर दोस व्हिच हैज ओरिजिन एंड सोर्स. रियल फोर्सेस आर दोस फोर्सेस व्हिच हैव origin and source. Students, क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए जो मैंने यहाँ पे लिखे? Students, is this much clear? I said it, the car is performing circular motion. For circular motion, what do you need? So you need the car to be held firmly onto the road. For the car to be held firmly onto the road, there should be force of friction between the tires and the road, and that should be proper. अभी चलो ध्यान से सुनना, अगर ये कार सर्कुलर मोशन चल कर रहा है, ध्यान से सुनना, कार सर्कुलर मोशन हो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन अगर आगे की तरफ ऑयल रखा हुआ है, स्टूडेंट्स, ऑयल पड़ा हुआ है, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? विल योर कार विल परफॉर्म सर्कुलर और विल गो टेंजेंशियली स्किड? हाँ स्टूडेंट्स, कार कैसे चली जाएगी? अगर रोड स्लिपरी होगा, टेंजेंशियल. यानी उसके पहले कार सर्कुलर मोशन कर रही थी ना. हाँ, किसकी वजह से कर रही थी? फ्रिक्शन की वजह से कर रही थी ना. जैसे फ्रिक्शन कम हुआ नहीं तो बॉडी तो टेंजेंशियली निकल गई भाई. तो व्हाट इज द कॉज? रीजन क्या था उसका सर्कुलर मोशन? फ्रिक्शन ही था ना. दूसरा, चलो रोड सही है, रोड इज वेरी गुड, no problem in the roads, the road is not wet, there is no slippery, but if the tires of the vehicle are not proper. स्टूडेंट्स, कुछ गाड़ियां होती है जो 8 साल 10 साल तुम अगर यूज करते हो और उसके टायर्स को ज्यादा चेंज नहीं करते हो. फॉर एग्जांपल, यू सी द रोड साइड टैक्सीज, द ब्लैक एंड येलो टैक्सी अगर तुम देखोगे तो दोस पीपल कांट अफोर्ड मच टू चेंज द टायर्स. स्टूडेंट्स, क्योंकि एक एक टायर की वैल्यू 2500 3000 होती है. 2500 3000 4000 के टायर्स होते हैं. जैसी अच्छी गाड़ी, जैसी बड़ी गाड़ी, जैसी एसयूवी, उतना उसका कॉस्ट बढ़ेगा. स्टूडेंट्स, अगर कोई अच्छी गाड़ी देखोगे ना तो वो अच्छी गाड़ी का रेट इक्वल टू अ स्कूटर होता है. बाइक का रेट होगा 75,000 का एक टायर आता है अच्छी गाड़ियों का. सिर्फ एक टायर 75,000 का. सोचो. तो इफ यू लुक ओवर हियर, अगर सपोज टायर्स ही अच्छे नहीं है, उसमें ग्रूज ही नहीं है, तो गाड़ी तो स्किड होगी. तो गाड़ी सर्कुलर मोशन क्यों कर रही थी? तो तुम बोलोगे सर बिकॉज ऑफ द रियल फोर्स. रियल फोर्स है क्या? जिसको ओरिजिन होना चाहिए, जिसको सोर्स होना चाहिए. यहाँ पे कौन सा है? फ्रिक्शन है.
ये रियल फोर्स हम किसका नाम देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? सर फ्रॉम द कार, द फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज ऑलवेज फ्रॉम वेयर टू वेयर? From the car towards the center, and that is your force of centripetal. So can I say force of centripetal is certainly the cause, okay, for car to perform uniform circular motion, and force of centripetal is provided by, equal to का मतलब क्या है? Provided by whom? Provided by force of static friction. क्या ये क्लियर हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल हमें कौन प्रोवाइड कर रहा है? फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का भी डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? अंदर ही जाएगा ना। पोजीशन वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, बस ये तो पोजीशन वेक्टर है। ये क्या है उसका? टैंजेंशियल स्पीड। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स क्या ये क्लियर हुआ? So we say that yes. Yes, sir. Yes, indeed, yes. Yash, is it clear? Yes, sir. तो अभी देखो इक्वेट करो, फोर्स सेंटीमीटर इज इक्वल टू फोर्स ऑफ सेंटीमीटर। फ्रेंड्स इक्वेट करो ना, तो फोर्स ऑफ सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या है? सर एम वी स्क्वायर बाय आर। ये कहां से आया सर? ये कहां से आया फोर्स सेंटीमीटर का? स्टूडेंट्स फोर्स सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन सेंटीमीटर। एक्सेलरेशन सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, आर ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने मैग्नीट्यूड में लिखा है स्टूडेंट्स, वेक्टर में नहीं लिखा, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं डाल रहा हूँ। तो तुम मैग्नीट्यूड में लिखो। तो देखो एक्सेलरेशन सेंटीमीटर का फॉर्मूला इसके पहले हम लोगों ने डिराइव किया था, लेकिन ये कहाँ से आया? तो तुम तुरंत बोलेगे सर आपने शायद v इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला यूज किया। स्टूडेंट्स एवरीबॉडी लिखो भैया, एवरीवन प्लीज कॉन्सिडर भैया। तुम्हारा फोर्स सेंटीमीटर का फॉर्मूला क्या है? एम आर ओमेगा स्क्वायर। अभी ध्यान से सुनना, अगर आर की जगह पे मैं v बाय ओमेगा लिखता हूँ स्टूडेंट्स, v बाय ओमेगा, तो मेरा आंसर क्या आता है? हाँ स्टूडेंट, v बाय ओमेगा। तो एग्जैक्टली माय आंसर विल बी, आर की जगह पे v बाय ओमेगा, तो एग्जैक्टली m इंटू v इंटू ओमेगा। आई गेटिंग इट? हाँ या ना? तीसरा फॉर्मूला, कैन आई सब्स्टिट्यूट ओमेगा? यहाँ पे ओमेगा की जगह पे v बाय आर डाल सकता हूँ मैं? हाँ सर, v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर आ जाएगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आ गया तुम्हारा फॉर्मूला एम वी स्क्वायर बाय आर। Students, how many formulas are there for centripetal force now? पहला वाला हमें कहाँ से मिला? डेरिवेशन से, एम आर ओमेगा स्क्वायर। Then using the formula v is equal to r omega. Second formula v is equal to 4 centimeter is mb omega mb square bar. ये तीनों में से मैंने कौन सा यूज किया? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर एंगुलर वेलोसिटी दिया ही नहीं है ना, ओमेगा कहीं नहीं दिया है। हमें पूछा क्या है? v। हमें पूछा क्या गया है? v। दिया क्या है? रेडियस। दिया क्या है? मास ऑफ कार, बस। तो mv स्क्वायर बाय आर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes, sir. So now can I say mv square by r is a force centripetal that is equal to force of static friction. What is force of static friction? So we know laws of motion much more better than circular motion. हमें आपके चैप्टर्स के आंसर्स नहीं आते, लेकिन हमें लॉस ऑफ मोशन का परफेक्टली आता है। फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? म्यू इनटू एन। तो देखो mv square by r is equal to mu s. What is n? m into g. m will get cancel. आ गया तुम्हारा फॉर्मूला। And that's the formula for maximum velocity for a car to move on a circular unbanked road. यानी स्टूडेंट्स कभी भी अगर किसी ने पूछा can you tell us what exactly the formula for velocity of a car on a circular but unbanked road,
भले वो वर्ड फ्रिक्शन यूज नहीं कर रहे फिर भी तुम अनबैंक्ड रोड बोल दिया, भले वो फ्रिक्शन नहीं यूज कर रहे फिर भी तुम्हारा आंसर होगा v is equal to under root mu rg. What does mu stands for? Coefficient of static friction. What does r stands for? Radius of the circular path. What does c stands for? Gravitational acceleration or acceleration due to gravity. और ये इक्वेट होने से मिला। तो स्टूडेंट सिंपल रीजन था कि बॉडी अगर परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट स्पीड तो उसके लिए तुम्हें एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप का रियल फोर्स होता है। रियल फोर्स वो होते हैं जिनको ओरिजिन और सोर्स होता है। तो यहाँ पे हमारा रियल फोर्स शुड बी ऑलवेज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो वो फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन होगा। कैसे मैंने बोला कि फ्रिक्शन की वजह से कार सर्कुलर मोशन कर रही है? तो मैंने रीजन दिया, कार सर्कुलर मोशन कर रही है और आगे अगर सपोज ऑयल पड़ा होगा तो वो तो स्किड होगी। तो पहले वो सर्कुलर मोशन कर रहा था किसकी वजह से? Between the friction between the tires and the road. That's why it was performing circular motion. तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया। यहाँ पे अभी हमारे 3 फॉर्मूला से 4 सेंटीमीटर, मैंने ये वाला उठा दिया, m कैंसिल हो गया, आंसर मिल गया। अभी ये है मैक्सिमम वेलोसिटी स्टूडेंट्स। उसका मतलब ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, अगर सपोज तुम कोई ट्रैक पे चले गए, तुम रोड पे चला रहे हो स्टूडेंट्स, और वो रोड ऐसा थोड़ा सा सर्कुलर ट्रैक है और एक बड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस रोड है स्टूडेंट्स, हाईवे जैसा। तो स्टूडेंट्स हैव यू सीन इट? वो हाईवे के ऊपर ऐसा स्पीड लिमिट लिखते हैं, स्पीड लिमिट इज 100 किलोमीटर पर आवर। तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये वो मैक्सिमम स्पीड है। अगर बाय चांस तुम्हारी कार 100 से ऊपर गई स्टूडेंट्स, इफ v इज ग्रेटर देन v मैक्स, तो होगा क्या? कार टेंजेंशियली बाहर चले जाएगी, यानी कार क्या हो जाएगी? टॉपल हो जाएगी, पलटी मार देगी स्टूडेंट्स। तभी जाके हम कोई भी स्पीड लिमिट से ज्यादा कार नहीं चलाता है। जब भी तुम लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो या तुम्हारे पापा चलाते हैं या तभी तुम ड्राइव करके कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे जाते हो, तो ड्राइवर हमेशा स्पीड लिमिट को मेंटेन करके रखता है। अगर स्पीड लिमिट 100 दिया होगा तो वो 100 से ऊपर नहीं जाएगा, 100 मैक्सिमम है, 100 से ऊपर गया तो भाई कार पलटी मार देगी और वो बाहर की तरफ पलटी मारेगी। अगर तुम्हारी स्पीड इज लेस देन वी मैक्स तो ये क्या बन जाएगा? ये सबसे सेफ स्पीड है। तो अगर किसी ने क्वेश्चन में पूछा स्टूडेंट्स, किसी ने एमसीक्यू पूछा व्हाट इज द सेफ स्पीड, व्हाट इज द सेफ स्पीड फॉर द कार टू मूव इन अ सर्कुलर अनबैंक्ड रोड, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए लेस देन 100 μ/g। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड? इक्वल टू 100 μ/g। व्हाट इज द स्पीड फॉर इट टू टॉपल? ग्रेटर देन 100 μ/g। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. कैन आई erase it स्टूडेंट्स? Okay. सर आप इसका रिकॉर्डिंग भेज देंगे? एक्चुअली मैं नोट्स मेंटेन नहीं कर पा रही। It will be in the portal. Yes, I will send it. Don't worry. Okay, students. Next lecture will be continuing from further. लेकिन please students, इतने formulas thoroughly करना students. Don't now waste your time students. Okay, revise करना students और formula करते रहना. Okay.